Yes, very good afternoon, my dear friends. Dosto, good afternoon. Right, come on. We have been discussing the topic of what? Income from salaries. In that, we discussed a lot of interesting points, but we still have so many points left to talk. Today, we'll spend some very good time on discussion about many interesting points in salaries. Are we ready, my dear friends? Yes. Everyone, come on, please reply. Yes, Chalo, friends, without any delay, let's proceed once, and we'll quickly revise once, and then we'll move forward. Tell me, guys, first of all, what is section 45.1? Charity section for capital gains. 45.1a. Insurance compensation. Correct, my dear friends? 45.1b. Taxation of ULIP. Very good. 45.2. Conversion of capital asset into stock in trade. 45.2a. Transfer of securities in demat form. 45.3. Partner to firm. 45.4. 45.5 beta. Compulsory acquisition. 45.5a. Taxability in case of joint development agreements. 46 beta. Distribution on account of liquidation is not regarded as transfer in the hands of company, but is taxable in the hands of shareholders. Dosto clear hai? Everybody, sir? Good. 47. Transaction which are not regarded as transfer. 48. Computation. 49. 1. Cost to previous owner. 50. 50A. Power sector units when they follow SLM. 50B beta. Slum sale. 50C. Stamp duty value in case of land and building. 50CA. Unquoted shares. 50D. If selling price is not determinable, fair market is deemed to be selling price. Exemptions क्या क्या पढ़े बेटा हम लोग? 54, 54F. ये दोनों में फर्क क्या है? 54 is only when what is sold is a long-term residential house property. 54F is what is sold as any long-term capital asset other than residential house property. बराबर है बेटा? And in both cases, common point is time limits are same. 54F, there are two special points. Special point number 1, you should not own more than one residential house on the date of transfer. Special point number 2, exemption is given by way of a formula. What is the exemption? Amount invested into long-term capital gain divided by net sale consideration. Next, 54 EC. Investment in bonds of NHA, RECL, PFC, IRFCL, and what is sold is a land or building or both. Time limit? Within 6 months. 56 to 7B. Interest on compensation, interest on enhanced compensation. Nonsense answer. 7B is section applies when issue price is more than face value. Taxability is on difference between issue price and fair market value. If issue price is more than fair market value. 56 to 8. 56 to 9. Advance money forfeited on or after 1/4/2014 will tax under income from other sources. If it is before 1/4/14, section 51 will apply, which says reduce from cost on subsequent sale. Next, 56 to 10. Gift. 11. Compensation on account of termination of employment or modification of terms of employment related thereto. ऐसा रहना चाहिए. Good. 60. Transfer of income without transfer of asset. 70. Intra-head set off. 71. Intra-head set off. HP loss. How many years will carry forward? Speculation loss. 4 years. Specified business loss. Indefinite period. Unabsorbed depreciation. Indefinite period. दोस्तों याद है बेटा, इसे समझ में आ रहा है ना आपको? पक्का clear? Can we set off business loss with long-term capital gain? Yo, long-term loss with business gain. Business loss with salary. Business loss with casual income. Business loss with unexplained income. Obviously, answer is no. Yes or no, sir? What is section 5? Scope of? What is section 15? Charitability section for salaries. What it says? In order to tax under salaries, there must be employer-employee relationship. Then only we tax under salaries. If not, it is not taxed under income from salaries. Dosto clear hai? Everybody come on, please reply. Just 1 second.
कैमरा को थोड़ा डन, और थोड़ा सा परफेक्ट, बस थैंक यू. चलो guys, come on. So what is section 15, my dear friends? Chapter bit section for salaries. What does it say? In order to tax under salaries, what is required? Employer-employee relationship. Then only we tax under income from salaries. दोस्तों बराबर है? Now a question. Sir, employee worked for 12 months. Employee worked for what? And he received salary for 13 months. समझे क्या? स्टूडेंट आस्क सर पागल है क्या जो दिया? नहीं भाई, नेक्स्ट मंथ का सैलरी पे दे दिया. हो सकता है ना? अब मुझे बोलो कितने महीने का सैलरी टैक्सेबल है? वेरी गुड, 13 months is taxable. Next question. Employee worked for 12 months and he received salary only for 11 months. Very good. Salary is taxed on due or receipt, whichever is earlier. Getting my point, everybody? Come on, beta. Salary is taxed on what basis? Due or receipt basis, whichever is earlier. I repeat again, salary is taxable on due or receipt basis, whichever is earlier. I'm sure this point is making sense for all of us. Come on, my dear friends, please reply. Salary is taxed on what basis? Due or receipt basis, whichever is earlier. Clear? What is arbiter section for salaries? 15. What does it say? In order to tax under salaries, there must be what? Employer-employee relationship. Then only we tax under salaries. If not, there is no question of taxing under salaries. Chalo, my dear friends. Under salaries, we discussed that we have to spend some time on retirement benefits. We have to spend time on what beta? Allowances. And we have to spend time on perquisites. Allowances, major काम तो हो गया अपना. Perquisites, start करना बाकी है अभी. Retirement benefits, उसमें थोड़ा हो गया. Today also we'll cover a lot more important points. Clear, my dear friends? Today we may not complete, but major कम हो जाएगा आज. Ready? Clear, everybody? चलो, my dear friends. Allowances, children education allowance. 100 per month per child, maximum 2 children. Children hostel allowance. 300 per month per child, maximum 2 children. Tribal area allowance. 200 per month. Correct, no? Then, what about tiffin allowance? Fully taxable. Medical allowance. OT allowance. Special allowance. House rent allowance. Exemption is given with section 1013A. Least of the following is exempt. बोलो following क्या है? Actual HRA received. Second, rent paid minus 10% of salary. Last one, 50% of salary if house is in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Any other place, 40% of salary. Are we clear with that, everybody? If employee stays in rented house but does not pay rent, can he take HRA exemption? If he stays in own house, can he take HRA exemption? Can husband pay rent to wife and take HRA exemption? Question समझे क्या मेरा? Can husband pay rent to wife and take HRA exemption? Definitely possible. Both of them have got different plan. As long as the rental income is taxed in the hands of wife, husband can take HRA exemption. Boss, who will stop him? समझ में आ रहा है बेटा सबको? Everybody, sir? Good. Then, my dear friends, now, in this context, we also spoke about something called allowances, which are given for official purpose. Exemption क्या होगा? Amount what we have received or actual what we have spent, whichever is lower. Guys, correct, no? Next, moving forward. Retirement benefits. इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग अभी तक? Gratuity कल हो गया ना? Next, ये भी हो गया कल. और क्या हो गया? बस ये दोनों ही हुआ ना? फिर अपना टाइम किधर गया फिर? हाँ, ये खत्म हो गया ना? 16(1)(a), 16(2), 16(3). दोस्तों, from gross salary we take this deduction, balance will become taxable salary. What is 16(1)(a)? Star deduction. कितना बेटा star deduction? 50,000. 16(2). Entertainment allowance deduction is only for government employees. मतलब सबके लिए taxable है. सबके लिए taxable है. But deduction सिर्फ government employee कितना है deduction? Least of the following three is exempt. What is that first one? Actuals. Second one, 20% of basic salary. Last one, 5,000. दोस्तों clear है? Everybody? हिट कट हो जा रहा है, पता नहीं क्यों. थोड़ा सा इसको ऊपर करना है नीचे करना है, समझ में नहीं आ रहा.
बस 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 मैं टाइट कर दूं. स्मार्ट आदित्य डेली अरेंज. चलो 16 इज व्हाट स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना बेटा 50,000. 16 टू एंटरटेनमेंट अलाउंस अभी के लिए टैक्सेबल तो है ही, बट डिडक्शन इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. कितना बेटा डिडक्शन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट. आई मीन allowed as डिडक्शन कितना है. एक्चुअल्स 20% ऑफ बेसिक सैलरी. थर्ड वन 5,000. 16(3) प्रोफेशनल टैक्स क्या करेंगे बेटा इसमें. इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉई कुछ नहीं मतलब डायरेक्टली रिड्यूस करेंगे. पेड बाय एम्प्लॉयर पहले ऐड करेंगे फिर रिड्यूस करेंगे. आज क्लैरिटी आ गई ना बेटा. I think yesterday with by problems what we discussed we got good clarity, and today I'll teach you some perquisites and we'll discuss some questions where all mixed is there. Correct? तभी perfect होंगे ना यार. चलो next let's proceed. Come on. Gratuity which section? 10. That's it. ए बोले आप 10 है बोले. अच्छा ए को है कर दिया अभी. Gratuity exemption which section? 10. During employment क्या होगा बेटा. Fully taxable. Upon retirement for government employee fully exempt. Non-government covered under Gratuity Act, not covered under Gratuity Act. Covered under Gratuity Act. Actuals 20 lakhs 15 by 26 into last drawn salary into number of committed years of service और part exceeding salary का मतलब क्या है. Entirety है याद रख लो बेटा. अगर not covered वाला है तो actuals 20 lakhs half into average salary into number of committed years of service. Average salary means last 10 months divided by 10. And वहां पे याद रखने वाली क्या बात है. salary means as per HRA. क्या मतलब उसका basic plus DA which part of salary for all retirement benefits plus commission by fixed percentage of turnover. And question will tell that DA forms part of salary. मतलब वही है. Next pension 10. A. What are the two types? Uncommuted and commuted. Uncommuted मतलब meaning क्या है. Periodical pension. Exactly. It's fully taxable. Commuted pension. Wonderful. It comes lump sum. Good. Government employee fully exempt. अरे पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जाम ना यार. अरे क्या बोल रहे बेटा. Uncommuted is fully taxable. Commuted for government employee it is exempt. For non-government only we have got gratuity received, gratuity not received. क्या हो बेटा. अच्छा ठीक है ना यार. ठीक है सुनो अभी तो. चलिए गवर्नमेंट तो एग्जामेशन आते हैं ना यार. अनकम्यूटेड के लिए फुली एग्जाम्प्ट है. कम्यूटेड है तो टैक्सेबल है. सॉरी कम्यूटेड है तो एग्जाम्प्ट ही है. अनकम्यूटेड है तो फुली टैक्सेबल. सर समझ में आ रहा है क्या. I repeat again, listen carefully. Pension, uncommuted, commuted. Uncommuted, fully taxable. Commuted, government employee, fully exempt. Non-government, 2 cases. Covered नहीं है मेरे भाई. Gratuity received, gratuity not received. Covered की बात नहीं है वो. Gratuity received है तो 1/3. Not received, half. 1.5. 1/2. Correct only. 1/2 is correct. But you cannot tell 1.5. Exactly. 1/3 and half of what? Total value of pension. Meaning याद है ना बेटा उसका. कल क्वेश्चन में डिस्कस करें हम. How do we calculate that total value of pension? I'm sure we got a clarity of thought on this. Everybody online guys, are we clear with this concept? Everyone please reply. Come on. ठीक है done. Perfect. Good. चलो बेटा. We are done with gratuity. We are done with what my dear friends? Pension. Let's look at something called लीव सैलरी. सर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बोलता हूं. सुनो एक बार प्लीज. सर ग्रेचुइटी लिमिट्स क्या है बेटा. फर्स्ट एंड सेकंड वन. एक्चुअल्स 20 लाख. कवर्ड भी है तो 20 लाख की है. नॉट कवर्ड तो भी 20 लाख की है ना. वो तो आपको याद है ना बेटा. अभी सुन लो ध्यान से एक बात. लिसन वेरी क्लियरली प्लीज कॉन्सेंट्रेट. सर इमेजिन शिवा तेजा रिटायर फ्रॉम अ जॉब and I took gratuity exemption of 4 lakh and I joined one more job. After 10 years I retired from there also. Law is telling जो 20 लाख का लिमिट है ना वो अभी 16 लाख बन जाएगा. शायद आपको कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ. Gratuity exemption what you have taken already shall be reduced from the statutory limit of 20 lakh. Indirectly meaning क्या बोल रहे हैं.
लाइफ टाइम में आप 20 लाख के ऊपर एग्जामिशन नहीं ले सकते. मीनिंग होगी ना बेटा? सर पक्का क्लियर? डन. नेक्स्ट, लीव सैलरी. फ्रेंड्स, व्हाट इज लीव सैलरी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट ए क्लैरिटी. लीव सैलरी का मतलब क्या है? Exactly. Lot of software companies have got their own policy. Not just software nowadays. Every sector that's common. This concept is very common. Wherein even if you take some leave, for example, मैंने को एक लीव देते. Assume करो, मैंने को 2 लीव. मतलब साल में 24 लीव्स तो आपके पास. मतलब 24 डेज आप काम भी नहीं करोगे तो भी पूरा सैलरी आएगा आपको. इमेजिन आप 24 डेज छुट्टी दिए, लिए ही नहीं, पूरा 24 दिन काम किए, तो 24 days you have to get extra salary, no? That is called leave salary, technically given for paid leaves. Paid leaves. Getting clarity? Now what law is telling is that during employment to taxable. We are talking about the case of at the time of what? The time of retirement. At the time of what, beta? Retirement. Some software companies, what policy they have, you know? They have a policy like, I'll give you one day leave in every month. 1 day leave every month. ठीक है ना? आपको यूज करना है तो यूज करो, यूज नहीं करना है आप इनकैश तो नहीं होगा. समझ रहे? कोई थोड़ा कंपनीज क्या कर रहे? मतलब लीव एनकैश में पैसे दे रहे नहीं. उस केस में ये हो सकता है क्या? लीव एनकैशमेंट आएगा नहीं ना, पैसे ही नहीं दे रहे तो क्या है फिर? तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेट कर लेते. और जैसे कुछ फेस्टिवल आया, दसरा, दिवाली, समथिंग इज कमिंग, दे प्लान फॉर अ वीकेंड, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हॉलिडे, दे विल टेक 2 days दिस साइड, 2 days दैट साइड. एक हफ्ता छुट्टी. हो गया ना यार? कैसे तुम एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे नहीं, उससे छुट्टी तो एंजॉय करें. गॉट इट? नो. सैलरी एम्प्लॉय का दिमाग तो वैसे चलता है, मैं कम काम करूं, ज्यादा काम करूं, सैलरी तो उतना ही मिलना है, तो मुझे जितना काम करना उतना ही काम करूंगा. बराबर है ना बेटा? डन. At the time of what, my dear friends? Retirement. Least of the following. I repeat again. What is the line I wrote, sir? Least of the following is exempt under section 1010 AA. 1010 what, beta? AA. What is 1010? Chalo beta, what is 1010? Gratuity. 1010A? Pension. 1010 is what? Gratuity. 1010A, pension. We're talking about what? 1010 AA. List of the following is exempt. First one, actuals. Second one, 3 lakhs. Third one, 10 into average salary. Sir, what is average salary? Last 10 months divided by 10. And salary same as HRA. Meaning क्या है? Basic plus DA if part of salary plus commission given as a fixed percentage of turnover. Sir, इतना याद रखने जरूरत नहीं है. I feel so pathetic when students keep telling salary का meaning वो पे जगह पे अलग है, ये जगह पे अलग है, इधर अलग है, उधर अलग है. उतना टेंशन कुछ बात ही नहीं है. I'll tell only 4 cases. Case number 1, entertainment allowance, only basic salary. Entertainment allowance only basic. Gratuity covered under Gratuity Act. Basic plus full DA. बराबर है ना? थर्ड, एक रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ाऊंगा मैं, आज ही पढ़ाऊंगा रेंट फ्री अकोमोडेशन, उधर का मीनिंग अलग है. फोर्थ, ऑल अदर केसेस. ऑल अदर केसेस मीनिंग क्या है? पीएफओ कुछ भी हो भाई, पीएफओ, ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड हो, लीव सैलरी हो, कुछ भी हो, मीनिंग क्या है? एचआरए का भी बेसिक प्लस डीए इफ पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन इज गिवन एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. दैट्स इट. समझ में आ रहा है बेटा? उसमें इतना क्रेजी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है वो. अननेसेसरी वी आर ट्राइंग टू कंफ्यूज आवरसेल्फ थिंकिंग दैट अरे इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है. बहुत ही सिंपल है. समझ में आ गया ना वेदांत? क्लियर? नो? डन. गुड. कम ऑन. व्हाट आर द लिमिट्स? फर्स्ट वन actual, second one 3 lakhs, third one 10 into average salary. But story is not over. One more limit also is there. The fourth limit is generally 3 limit रहता है, but इस केस में 4 limit है यार. 1 month leave. क्या बेटा? 1 month leave for every completed year of service. एक्ट के हिसाब से क्या बोल रहे बेटा वो? 1 month leave for every what, my dear friends? Completed year of service minus leave availed. Availed मतलब what you have utilized.
Sir, eligible is different, availed is different. Availed का मतलब utilized into average salary. समझे क्या बेटा? चिराग जा रहे दिमाग में? बोलो लिमिट्स क्या बेटा? बस कब रिपीट करो सब लोग. Actuals 3 lakhs 10 into average salary, 1 month leave for every completed year of service minus leave availed into average salary. Now I'll tell one statement. I'm sure you'll easily understand. First time if you enjoy leave salary, enjoyed exemption of 1 lakh. Second time again if you're enjoying exemption, that 3 lakh will become 2 lakh. I think you understood this. Statutory limit कम हो जाएगा boss. That is a statutory limit. Clear no? Now listen. Let's take one example and get a clarity on this. सुन लो बेटा, ध्यान से सुन लो. Sir, imagine a case where one person, Mr. X, left the job and received 8,50,000 as leave salary. ठीक है ना? After rendering service of 21 years, 8 months, 12 days. ठीक है? Now listen. As per company policy, 36 days for every completed year is allowed, and leaves unutilized is equal to five and 6 days. Salary at the time of retirement basic 50,000 per month, DA 10,000 per month, 50% forms part of salary. This is same since last 1 year. कुछ समझ गया ना बेटा? चलो डन, कैलकुलेट करो 2 मिनट्स, निकालो आंसर. कितना आएगा एग्जाम्शन?
लास्ट टाइम दिस इज सेम लास्ट 1 ईयर, इसका मतलब क्या है? लास्ट टाइम पूरा सेम है, मतलब एवरेज सैलरी में सेम ही आएगा। समझ गए ना मीनिंग उसका? हाँ, एवरेज सैलरी के लिए दिया, ठीक है ना। अगर 9 महीना अलग है, 1 महीना अलग है, तो क्या करते फिर? एवरेज सैलरी वर्किंग में बदल जाते हैं, बराबर है ना बेटा? हो गया क्या बेटा? ऑनलाइन जो है बेटा आंसर दो फटाफट। दोस्तों डन? सेशन का है क्या आंसर? हो गया क्या बेटा? एग्जाम में 5.5 लाख है? अच्छा, एग्जाम में 3 लाख आ रहा है क्या? ठीक है, लिमिट्स क्या बेटा? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मिला कितना? लीव सैलरी रिसीव्ड इज 8,50,000। दोस्तों क्लियर ना? लेस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। चलो बेटा, फर्स्ट वाला क्या है? एक्चुअल्स कितने हैं? वो एक्चुअल्स 8,50,000। सेकेंड, स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है? 3 लाख। थर्ड वाला क्या है? 10 इंटू एवरेज सैलरी,
व्हाट इज एवरेज सैलरी फर्स्ट ऑफ ऑल? 55,000. उसमें तो कुछ काम ही नहीं दिया आपको मैंने तो. अगर 10 में लास्ट 10 में से बदल जाते तो कैलकुलेट कर लेते हम लोग. ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन करवाए मैंने आपसे, तो इसलिए उस पर टाइम पास नहीं करवा रहा हूं मैं. जो ऑलरेडी कर चुके उस पर टाइम पास क्यों? ठीक है ना? कितना? 5 lakhs 55 5,50,000. ठीक है. फोर्थ वाला ये क्वेश्चन है, सुनो भाई. व्हाट इज द लिमिट ऑफ फोर्थ वन? 1 month लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. हाउ मेनी इयर्स कंप्लीटेड? 21 years. Correct, no? Minus leaves what he has availed. कितना avail किया? 240. 240 कैसा है मतलब? ये भाई 36 days for every year is allowed. ये कंपनी का पॉलिसी, उसमें से अपने क्या लेना देना है भाई? बट 36 into 21 कितना होता है? कुछ 700 चेंज में कैलकुलेट करके बोला फिगर, वो 756. उसमें 5 and 6 अनयूटिलाइज्ड है. तो यूटिलाइज कितना है? 240. 240 का मतलब क्या है? 8 months. नहीं समझा क्या? अरे यार दोस्त, मैं कैलकुलेटर ऐसे टाइम पास के लिए लिया नहीं भाई. सुनो ना वापस, लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली. कंपनी पॉलिसी सर, अपना लास्ट वाला लिमिट का फॉर्मूला क्या है? 1 month लीव फॉर एवरी व्हाट? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव्स अवेल्ड. अवेल्ड मत, अब आप एक काम करो, यूटिलाइज बोल के याद रख लो. ठीक है ना? मीनिंग तो वही है ना. हाँ, मतलब जितना 1 month लिमिट एक्ट के हिसाब से, उसमें से कितना यूटिलाइज कर ले माइनस करो इनटू एवरेज सैलरी. मीनिंग तो वही है ना, अनयूटिलाइज इनटू एवरेज सैलरी. बट अनयूटिलाइज वी डोंट वांट एज पर कंपनी पॉलिसी, वी वांट एज पर इनकम टैक्स. इनकम टैक्स 1 month लीव अलाउड है. कंपनी पॉलिसी कितना अलाउड है? 36 days फॉर, हम कितना साल हो गया? 21. सो 36 into 21 756 है. मतलब कंपनी पॉलिसी के हिसाब से इतना एलिजिबल है, और बच गया कितना अभी? मतलब कितना यूज्ड है? 240 यूज्ड है. 240 यूज्ड है मतलब डिवाइड बाय 30 कर लो, 8 months. क्वेश्चन क्यों दिया समझा क्या बेटा? अरे सिर्फ पढ़ाते गए तो काम नहीं होगा यार. बैच खत्म हो जाएगा, बट सिर्फ खत्म होगा, बस फिनिश हो जाएगा. एंड यू नो वेरी वेल, फिनिश पे कंप्लीट में बहुत फर्क है यार, जमीन आसमान फर्क है. सर एक बात बोलो क्या? सच्ची बोलता, मतलब आई टेल दिस पॉइंट. आपके बैच अगर जल्दी खत्म करके 15 दिन जैसे बात किया, एग्जैक्ट 50 days में खत्म कर दिया ना, आपसे ज्यादा आराम मुझे मिलेगा. लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, बट आई डोंट वांट दैट. आई डोंट वांट दैट बिकॉज आराम करना अलग है, खुशी से बाहर जाना अलग है. आराम तो कभी भी कर सकते भाई, बट जिस दिन मैं कंप्लीट करूंगा आपका 1-2 दिन ज्यादा लेके, when we do it perfectly and perfectly we complete it, then the enough happiness will come to me also, to you also. Your time will worth it, my time will also be worth it, and I feel extremely happy. ठीक है यार, कुछ तो अच्छा काम किया. I'll also feel happy now. So getting clarity? फिनिश ही करना है तो बस कभी भी कर सकते हो, उसका कोई काम लिमिट ही नहीं है. सिंपल. गॉट द पॉइंट? नो? चलो इंटू 55,000. ये तो फिक्स है ना? कितना है ये? सर बाकी लोगों को नंबर गलत आया होगा, 3 लाख ही आया होगा, बट वर्किंग सही करना चाहिए बॉस. समझ में आया ना? लास्ट वाला लिमिट गलत करके फिर बात बोलो कि 3 लाख से लिए सर, मार्क्स हो जाएगा 3 lakhs. आदित्य समझ में आएगा ना बेटा? टैक्सेबल 5 lakhs. दैट्स इट. गुड. सर आई एम श्योर लिमिट्स का क्लैरिटी आ गया बेटा. एक क्वेश्चन दूं क्या? पक्का? बट मैं क्वेश्चन दूंगा तो सिर्फ ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा क्रेजी रहेगा ऑब्वियसली. राइट ऑन. मिसेस एक्स, मिसेस एक्स, मिसेस एक्स has retired. Mrs. X has retired from ABC Private Limited. Mrs. X has retired on ABC Private Limited, from ABC Private Limited on 31st Jan, on 31st Jan 2023. आप जैसा बोल रहे हो ऑनलाइन में भी पूछ रहे. वन मोर क्वेश्चन सर,
ठीक है, on 31st Jan 2023, after rendering service of 12 years 11 months 29 days, 12 years 11 months 29 days, full stop. At the time of retirement, salary was as under basic salary 40,000 per month, bracket 35,000, basic salary 40,000 per month, ठीक है ना बेटा, bracket 35,000 per month, up to 31st March 22. DA 20,000 per month, bracket 50% forms part of salary. ठीक है ना बेटा, full stop. On retirement, she received 15 lakhs. She received 15 lakhs as gratuity, covered under Gratuity Act. 15 lakhs as gratuity covered under Gratuity Act. Full stop. She also received leave salary of 4 lakh. Full stop. As per company policy, as per what beta? Company policy. As per company policy, 25 days for every completed year is allowed. 25 days for every completed year is allowed. "25 days for every completed year is allowed." Correct, no? Full stop. Leaves unutilized. कितने साल काम किया? 11 साल 12 साल. Leaves what beta? Unutilized is 210 days. 210 days. ठीक है ना बेटा? Next. Right below. She also received uncommuted pension. Of 10,000 per month. On 10,000 per month. Full stop. On 1st March 23,
on 1st March 23, she commuted 40%. She commuted 40% and received 1,20,000 and received 1,20,000. Determine amount taxable. Determine amount taxable. दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा? एक सेकंड before you proceed, I will tell one point first, then you can start. Sir, in that question, when did that lady retire? 31st of Jan. अभी जब आप लास्ट 10 month सैलरी लेंगे तो क्या लेंगे? अरे प्रेसिडेंट 10 month सैलरी लेना है ना? प्रेसिडेंट 10 months मतलब कौन सा लेंगे? अरे क्या बोल रहा है यार? जब 10 months का सैलरी लेना है, एवरेज सैलरी निकालने के लिए, एवरेज सैलरी निकालना है ना अपने को, एवरेज सैलरी लेना तो लास्ट 10 months का लेना है ना? लास्ट 10 months मतलब कहां से कहां तक लेंगे आप? अप्रैल 22 से लेके जनवरी तक, दिसंबर तक 9 हो रहा है, जनवरी महीना हो रहा है, बराबर है ना बेटा? इधर एक ट्विस्ट है. व्हाट इज दैट? लिसन, एग्जाम में एक बार खेला था ये पॉइंट पे, ये ट्विस्ट पे. व्हाट इज द ट्विस्ट इज, इन ग्रेजुएटी they told in the law last 10 months salary preceding the month of retirement in gratuity, but in leave salary they told last 10 months salary up to the date of retirement. आप लोग समझ रहे क्या? मतलब लीव सैलरी के लिए जब एवरेज सैलरी निकालोगे आप तो क्या करोगे? जैन को इंक्लूड करेंगे, बट जब ग्रेजुएटी के लिए करेंगे, अब ये देखो, सी दिस वर्ड. नो सर, ये दिख रहा है कि आपको बात मत करो, एक सेकंड चालू मत करो, रुको ना यार. ये देखो ब्रैकेट में दिख रहा है आपको, बेस्ड ऑन लास्ट 10 months एवरेज सैलरी, क्या लिखा है? इमीडिएटली प्रोसीड इन द मंथ ऑफ रिटायरमेंट. मतलब जान इंक्लूड नहीं करेंगे ना दोस्तों? स्टूडेंट बोल रहा है सर ये क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा अपने को? ये क्वेश्चन में तो कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट है. एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता. स्टूडेंट पूछ रहा है तो क्यों पढ़ा, बता रहे आप एग्जाम में आए तो? अपने को तो क्लैरिटी चाहिए ना यार. एक स्टूडेंट आपसे से पूछ रहा है सर ये क्वेश्चन में क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ये कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट है. जब कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट है, एवरेज सैलरी का वर्ड आता ही नहीं ना. 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी है ना उधर, तो एवरेज सैलरी का कहानी आएगा ही क्यों? बट फिर भी मैं क्यों बता रहा हूं, समझ गए ना? आपको तो क्लैरिटी चाहिए ना बेटा यार. दोस्तों अगर मैं ये चीज आपको बताया नहीं, अपन हमेशा ये सोचते लास्ट 10 months मतलब अप्रैल से लेके जनवरी तक. अपना दिमाग तो यही बोलता है ना यार. ये चक्कर है ना, प्रोसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, दिस वर्ड इज इन ग्रेजुएटी. नाउ डोंट डू इट, वेट फॉर 2 minutes. ये पढ़ो, बेस्ड ऑन लास्ट 10 months एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट. ये लैंग्वेज समझे क्या? इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट. ये लीव सैलरी वाला. ग्रेजुएटी में क्या लैंग्वेज था? इमीडिएटली प्रोसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट. आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या लैंग्वेज को? अरे यार ग्रेजुएटी में क्या लिखा है? मंथ ऑफ रिटायरमेंट, प्रोसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट. इधर क्या लिखा है? प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट. डिफरेंस यू अंडरस्टूड नो? खेलना है तो ऐसे ही खेल सकते हैं इसके ऊपर. समझ में आ रहा है क्या बेटा? क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में? इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा. इस क्वेश्चन में क्या है? लीव सैलरी तो अपन जान तक लेंगे, और ग्रेजुएटी में तो कवर्ड वाला केस है. जब कवर्ड वाला केस है तो लास्ट ऑन सैलरी लेंगे ना, एवरेज सैलरी थोड़ी निकाल तो बैठेंगे अपन. पक्का क्लियर है? करेंगे सॉल्व? चलो बेटा खत्म करो. डू इट, कम ऑन.
हो गया बेटा? Online students have given answer for leave salary and gratuity. लीव सैलरी क्या? लीव सैलरी एक्सपेंशन कितना है? 3 लाख है क्या? 3 लाख ही आया? और लास्ट वाला कम नहीं था? लास्ट वाला 4.5 लाख है? ओ, हो सकता है, क्यों नहीं? तभी हो सकता है अगर कंपनी का लीव पॉलिसी बहुत ही कम है तो। दो महीने का ही। अपन जो जो साल की बात करें उससे बात करेंगे। क्यों 1 महीने का आएगा? रिटायर कब हुआ? तो फरवरी को भी पेंशन आएगा ना, क्यों नहीं आएगा फरवरी को पेंशन? हाँ, तो मार्च पूरा कंप्लीट किया गया। तो फिर क्या भाई? चलो, लीव सैलरी कितना फिगर है? 1 मिनट रुको, क्या लास्ट 1 मिनट? इश्क सूफिया, इश्क सूफिया।
somebody is asking pension is received on what? Received on मतलब क्या? रिटायरमेंट हो गया, अगले महीने से आएगा पेंशन. ये क्या क्वेश्चन है? जिस महीने रिटायर हुआ वो महीना थोड़ी आएगा. When you retired on Jan 31st, Jan का तो सैलरी आएगा ना, तो पेंशन क्यों आएगा? Yes, नित्या, करेक्ट नो? होएगा क्या बेटा? चलो, लीव सैलरी कितना फिगर है जो आया? Least to the following is exempt. First one, 4 lakhs. Second one, third one, 10 into 50,000. Average salary बोला ना मैं. Average salary means what? Up to the rate of retirements. तो अपने पहले जो 35,000 है उसको तो 11, 30,000 जो 11 नहीं है उसको. अभी जो वही देखेंगे. 40 plus 10, 50. That's all. 10 into 50,000. नहीं, डिस्कस कर रहा हूं यार, कुछ नहीं. 5 lakhs. Last one. 1 month leave into 12 years minus 3 months. अभी सबको क्लैरिटी आ गया ना कैसा करने का? Into average salary. Least is taxable is 1 lakh. I think we got a very good clarity on how do we do the calculation. एग्जाम आए तो कर लेंगे ना आराम से. गुड. और क्या रिक्स बेटा? ग्रेजुएटी कितना है? 15 लाख. एग्जामिशन लिस्ट टू द फॉलोइंग. एक तो 15 लाख, दूसरा है 20 लाख, तीसरे का ही काम है बस अपने को. 15/26 इंटू हाँ कितना? व्हाट इज द बेसिक सैलरी? अच्छा 40 plus 20 ना. 60,000. करेक्ट. यू आर राइट. इंटू 13. वेरी गुड. कितना है? 4.5. ओ इतना ही आया क्या? That's it. समझ में आया ना बेटा? नेक्स्ट बचा गया लास्ट में सिर्फ पेंशन. इसका क्या सीन है? सबसे पहले अनकम्यूटेड कितना है? 10,000 into 1 plus 10,000 into 1 into 60%. 16,000. समझिए कैसा आया? कल डिस्कस करें ना अपन ऐसे क्वेश्चंस. दोस्तों गुड. दिव्या इज सो हैप्पी. आंसर सही आया. कम्यूटेड कितना है? 1,20,000 लेस हाफ और 1/3. स्टूडेंट इज टेलिंग सर आप बोले ही नहीं, हमको कैसे पता चलेगा हाफ या 1/3? अरे ग्रेचुइटी आया ना यार, क्वेश्चन में बताया ना ग्रेचुइटी है, तो पूछने का क्या है? 1/3 इंटू 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 40. पता है ना अपने को, जब 40% कम्प्लीट करते इतना मिला है तो 100% कम्प्लीट करते कितना मिलता है? कितना है? 1 लाख. व्हाट इज टैक्सेबल? 20,000. दैट्स ऑल. क्या नित्या क्या करे? 13,62,000. क्या है आंसर? ये 21,20,000 पेंशन. ओ माय गॉड, सच ए डेंजरस आंसर. ये 2,12,000. नो रिप्लेस. गॉट इट. सॉरी, इट्स ओके. होता है एमपी में, छोटे छोटे गलतियां होते हैं. पूरा टोटल 20 + 16 + 1 + 10.5. अरे ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम में.
इसे प्रैक्टिस के लिए कराया मैं आपको। अब तीनों मिलके पूछना बहुत रेयर है। So are we clear with this question or not? Everybody? That's it. So we're done with 1010. We're done with 1010A. We're done with 1010AA. What is 1010 BC? Compensation on account of disaster. Receipt from central government or? Exactly. 1011A. Wonderful. Next I'll tell something called Provident Fund. If you enter service of more than 5 years, when you withdraw, withdrawal amount is exempt. याद है ना ये पॉइंट्स? बता दूं मैं आपको ये दोस्तों? Everybody, good. We'll talk more about Provident Fund soon. But yesterday we discussed about something in Provident Fund. Employer's contribution more than 12% of salary is taxable. Interest? Brilliant. Chalo, can we proceed? Let's discuss some special points. Then we'll discuss some more questions. ठीक है ना? हो जाएगा. चलो, concentrate guys. Let's talk about some interesting perquisites. In short, we call it as perks. स्पेलिंग चाहिए आपको. हाँ, benefits. Cash or non-cash? Both. Very good. That is the answer. But allowance perquisite में फर्क क्या है? Allowance is a fixed sum of money which is not concerned with the actual expenditure incurred, whereas perquisite is a benefit given by employer to the employee which is concerned with the actual expenditure incurred. Clear no? So याद सबको याद है ना बेटा ये? Everyone. चलो. Listen guys. Telephone. Allowance. Fully taxable. Telephone. Perquisite. Fully exempt. Food. So, समझ में आ रहा है कि मैं कैसे लिख रहा हूं आपको? Food allowance. Fully taxable. Food perquisite greater than 50 per meal is taxable. And generally, we presume that there are 300 working days in a year. And when we are presuming that there are 300 working days in a year, 350 is how much? 15,000. That is the exemption what we are taking. तो समझ में आया क्या बेटा? फूड अलाउंस, फूड परक्विजिट का स्टोरी क्लियर है? फूड अलाउंस का क्या सीन है? Fully taxable. Food perquisite? Exactly. So clear everybody? दोस्तों can I proceed? Next, listen. Sir, medical. What beta? Medical allowance. Medical perquisite. Allowance, क्या बेटा आंसर? Fully taxable. Medical perquisite beta, listen carefully. 4 cases it is not taxable. I repeat again, medical perquisite in 4 cases it is, what my dear friends, not taxable. Medical perquisite, 4 cases it is not taxable. What are 4 cases? Number 1, treatment is given in employer own hospital. Treatment is given in employer own hospital, or treatment is given in government hospital. Third case, treatment is given for specified diseases. There is some list given in the law of specified disease. For them it is fully exempt. What is the first one? Employer own hospital. Second one, government hospital. Third one, specified diseases. Fourth one, group medical insurance. चलो बेटा, how many cases not taxable? 4 cases not taxable. What are 4 cases? Employer own hospital,
Government hospital, specified diseases, group medical insurance. These 4 cases, what is the answer? Not taxable. Any other case, straight away, fully taxable. Put a star mark here. In other case, what is the answer, beta? Fully taxable. Now let's understand what is the meaning of this star mark. Star mark is the concept of treatment outside India. So India में treatment नहीं है, बाहर जा रहे. आजकल जरूरत नहीं पड़ रहा because majority is there in India, but still exceptional cases can't do anything. Correct? No. Law told cost of stay and treatment is exempt to the extent permitted by RBI. Cost of stay and treatment is exempt to the extent permitted by what, beta? RBI. And always keep in mind, all this treatment outside India, who is covered is only patient and one attendant. Family must not go. Exemption family को नहीं देते. Only for patient and one attendant. कोई भी चलता है. बट उनका एम्प्लॉयर कौन है? हाँ, yeah. But who's employer? Who is paying that money? All this story will come when employer is paying money for the treatment of employee. No. Next, cost of travel. Cost of what, beta? Travel is exempt if a सबसे घटिया पॉइंट है, gross total income does not exceed 2 lakhs. सबसे बेकार पॉइंट है. 100 रुपए के सामने ये तो कुछ भी नहीं है. याद है ना 100 रुपए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. हाँ, वो तो है. बट एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? हाँ, वो सेकंड पॉइंट क्या था? 10 months into average salary. समझ गया तेरा पॉइंट. 10 into एवरेज सैलरी. एवरेज सैलरी मतलब लास्ट 10 डिवाइड बाय 10. उससे अच्छा लास्ट 10 ही बोल सकते थे ना, बोल रहे हैं. तो एवरेज सैलरी लिख सकते थे बस. एवरेज सैलरी नहीं, लास्ट 10 मंथ सैलरी लिखना चाहिए. चलो, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? दोस्तों, इज दिस पॉइंट क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस? चलो, कम ऑन, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लिसन, एम्प्लॉयर has given loan to the employee. Sir, if employer wants loan, where can he go? बैंक में गया तो फ्री में देते क्या लोन? कुछ इंटरेस्ट रहेगा ना. अलग अलग लोन का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है. सर यस और नो? इमेजिन बैंक रेट इज 10%, एम्प्लॉयर इज गिविंग लोन एट 6%. एम्प्लॉय को फायदा हुआ नहीं हुआ? कितना फायदा हुआ? 4%. टैक्सेबल. बैंक इज 10%, एम्प्लॉयर इज गिविंग एट 12%. नथिंग इज टैक्सेबल. वो उतना भी क्यूट नहीं है लेने के लिए ऐसा. अरे यार बोलो यार. वी आर टॉकिंग अबाउट perquisite in case of interest free loan or concessional interest loan. लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या बेटा? इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल इंटरेस्ट लोन. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा ना. पर बाकी टैक्स पे तो पूरा तो टैक्स पे कर रहे, 30% ही पे कर रहे ना. चलो डन. इंटरेस्ट फ्री लोन और व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? कंसेशनल इंटरेस्ट लोन. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? लिसन केयरफुली हियर. We'll calculate the value of perquisite
on closing balance at the end of each month. Closing balance at the end of each month. In law, they use the word maximum outstanding monthly balance, MOMB. That language they used, which means closing balance at the end of each month. On that figure only we'll calculate. The reason for that closing balance giving is every month we repay some principal, no? Every month when we repaying some through EMI some amount, आपका amount तो कम होता जाएगा ना, तो आपका interest तो कम होता जाएगा ना फिर. दोस्तों, everybody getting clarity? Now listen to a special point. No perquisite if loan does not exceed 20,000. Clear, friends? And now for special point. To calculate this interest-free loan, we will consider SBI rate. किसका rate use करेंगे बेटा? SBI rate. I repeat again. We have to consider SBI rate on first day of previous year. For similar loan. SBI rate on first day of previous year for similar loan. सबको समझ में आ रहा है बेटा? Everybody, are we clear with this point, all of us guys? Yes, I have a question. Why we are taking similar loan? Because every loan interest rate is not same. Yeah? Now listen. Vedant has taken loan of 10 lakhs at 6% per annum from employer. Taken a better? But SBI rate is 10% per annum. Sir? Yes. And Vedant is repaying 12,000 per month. $12,000 per month on 5th of every month. Come on guys, what is the language I used? He is repaying what, my dear friends? 12,000 per month on 5th of every month. छोड़ पीछे रख दे, वो सुबह आ जाएंगे, डीटी वाले कोई रहेंगे. ठीक है, on 5th of what, my dear friends? Every month. Now how do we calculate perquisite बेटा? चलो, हर महीने का अलग अलग निकालना पड़ेगा ना. पूरा साल के एक साथ कर सकते हैं क्या? अगर हर महीने रिपे नहीं कर रहे तो पूरा साल के एक साथ कर सकते. कैसा? 10 लाख इंटू 4%, खत्म कहानी. बट हियर आई कांट डू 10 लाख इंटू 4% बिकॉज एवरी मंथ में रिपे करते जाओ ना थोड़ा थोड़ा. कैसे निकालेंगे फिर बेटा बोलो? अप्रैल, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? 9,88,000. यार क्या हुआ? बराबर है ना? चलो क्लोजिंग बैलेंस देखते ना अपन. हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट? 9,88,000 into 4% into 1 by 12. Three two 9,3. Like this we have to keep doing for May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. Come on, calculate and tell me the final answer. 1 minute time. निकालो. समझ गया ना? No, that part they'll not give in the question like that. उसमें प्रिंसिपल इतना ही EMI इतना करके क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस कर देते. We'll assume that there is principal only. Yes. That is a blanket assumption what we take.
Is second one 3263, 3253, 3253, 3213, 3173, 3133, 3093, 3053, 53, 3013. समझे क्या? कैसा 40 कम हो रहा है? अरे 4% का फर्क है यार. 4% का 12,000, 4% कितना हुआ? 480. 480 डिवाइड बाई 12, 40 रुपए हो गए ना यार. क्या इतना कैलकुलेटर चला रहे हैं आप लोग? क्या? तो फिर यार ठीक है. एनीवेज, समझ में आना बेटा? दोस्तों यार कुछ तो जवाब दो, ऐसा बैठो मत यार. Reply to, are we clear this part, everybody? Done. Let's proceed to talk about something very, very important. Listen, my dear friends. We are talking about perquisite with respect to assets given for use, assets which are sold. दोनों में फर्क है कुछ? क्या फर्क है? ये यूज है, ये सोल्ड है. वाव. For example, when you join the job, they give a laptop for use. That moment you leave the job, they will tell उधर रख और निकल. That's given for use. Sold मतलब क्या? उसको बोलेंगे इतना पैसा दे, ले ले. Correct, my dear friends? If it's given for use, lot old for computers or laptops, it is nil. मतलब nothing is taxable. Next, other assets. Other assets, if it is owned 10% per annum of actual cost. 10% per annum for what, my dear friends? 10% per annum of what? Actual cost. If it is hired, higher charges. If it is higher, then what is the answer, my dear friends? Higher charges. Getting clarity? So simple si baat hai, boss. When you join the job, I gave you one refrigerator. Or let's say I gave you one AC. Telling, enjoy, use it. वो मैं खरीदा AC. मैं खरीद के आपको दिया use करने के लिए. And I purchased it for 1 lakh and I gave that AC to you for enjoying. Then the value of perquisite is 10,000. I hope we are getting clarity on this point. Everybody saw. Then finally, asset is what, sir? Sold. Base the boss. Asset sold. Computers, laptops. What they told is, take actual cost. Take what beta? Actual cost. इसका original cost ले लो. From that, you reduce 50% by WDV for each completed year of usage. Chalo beta, what did we start with? What did we start with? Actual cost. I repeat again, we started with actual cost. Reduce what? 50% by WDV. For what? Each completed year of usage. For each completed year of usage. Less amount recovered from employee. Balance will become taxable. सर ये पॉइंट समझ में आया क्या बेटा? दोस्तों, everybody, let's take scenario like this. Listen here carefully. Come on, please concentrate, guys. Sir, I purchased one laptop for 1 lakh. For what value I purchased? 1 lakh. I used it for 4 years. And then I sold it to the employee for 10,000. I purchased for 1 lakh laptop for 1 lakh, used it for 4 years, then I sold it to the employee for 10,000. Then how much is taxable? 4 years now. 1 lakh first year, 50,000.
Speak out. 50,000 becomes 25. 25 becomes 12,500. 12,500 became 6,750. 6,250. 6,250 WDV asset. I gave it for 10,000. Nothing is taxable. तो समझ में आ रहा है क्या? एम्प्लॉयर के लिए क्या टैक्सेबल? एम्प्लॉयर के लिए तो वो डेप्रिशिएबल एसेट है, तो वो कैपिटल गेन डेप्रिशिएबल एसेट, वो वाला स्टोरी उधर जाएंगे अपन. याद है ना? सेक्शन 50 ब्लॉक, ओपन डब्ल्यूडीवी, असेट परचेज, असेट सोल्ड, क्लोइंग डब्ल्यूडीवी. ये संजलि याद है? गुड. कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स. सेकंड, motor car. Same story with small cosmetic change. Actual cost less 20% by WDV. Less amount recovered. Balance becomes taxable. समझ में आ रहा है क्या बेटा? दोस्तों यार थोड़ा रिप्लाई करो बेटा. Finally, any other assets? Actual cost less 10% by SLM. So, able to observe the difference in last case, no? Last case क्या है बेटा? 10% by SLM. Balance will become taxable. Are you clear with this part, everybody? Friends, please reply. Come on. पक्का? यार बोलो बेटा. Everyone? Sure? Done. So friends, what is the perquisite in case of asset sold? 3 computers and laptops, or could be any mouse, keyboard and all related items. What is the answer? Actual cost less 50% by WDV for each computer area of usage. Less amount recovered from employee. Balance will become taxable. Motor car. Actual cost less 20% by WDV. Less amount recovered. Balance will become taxable. Any other asset. Actual cost reduce what? 10% by SLM. And also reduce amount recovered. Balance will become taxable. दोस्तों clear है? Everybody, I'm sure we got a clarity of thought on this concept, my dear friends. Everyone, sir? Pakka clear? Sure? I'll give a question. From the following details, determine taxable salary. From the following details, determine taxable salary of Mr. Anand. For assessment year 23-24. Of Mr. Anand for assessment 23-24. Right below. Basic salary 50,000 per month. Bracket 60,000 per month. 60,000 per month from 15th December 22. From 15th December 22. Next, DA 10,000 per month. Bracket 30% forms part of salary. Next, fixed commission. Fixed commission
5,000 per month. Fixed commission 5,000 per month. Children education allowance. Children education allowance 1,000 per month per child for 2 children. $1,000 per month per child for how many children, sir? 2 children. Overtime allowance 500 per month. Professional tax 2,000. Bracket 1,000 paid by employer. Employer contribution to RPF. Employer contribution to RPF 15% of basic salary. 15% of basic salary. समझना बेटा? 50% of basic salary. Then interest credited to RPF. Interest credited to RPF 1,20,000. $1,20,000 at 12%. At 12%. Food facility. Food facility given by employer. सर एक चीज याद रख लो. In case of food, in case of tea, snacks, it is fully exempt. Tea, snacks, and non-alcohol beverages. So job mein generally, when I was working with EY, evening time they used to give snacks, which is chips, biscuits, tea, coffee. उसका कोई लिमिट नहीं है, exempt. जितना पीना है पी लो. हाँ? पूरा एग्जाम ही है. चलो क्या लिखा आप? फूड वर्थ फूड फैसिलिटी क्या लिखा आपने? गिवन बाय एम्प्लॉयर वर्थ 24,000. क्या करेंगे इसका बेटा? ये अलाउंस है. अरे फूड फैसिलिटी दिया यार, 24,000 वर्थ का फैसिलिटी दिया. ये फुली एग्जाम्प्ट क्या है? 50 पर मील इज टैक्सेबल. नो, 50 पर मील कितना वर्किंग डे अज्यूम करेंगे आप? 300 इंटू 50 कितना? 15,000. इसका वैल्यू कितना है जो मिला? तो कितना टैक्सेबल है फिर? 9,000. नहीं वो फिक्स्ड अमाउंट बोलता था ना मैं, फैसिलिटी नहीं बोलता था ना. फिर उतना वर्थ का फैसिलिटी दिया वो, तो समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, गिफ्ट by employer 8,000. Now let me tell the concept that is taxable. Wonderful, good. Generally the gift limit is 50,000 other sources, but gift from employer to employee the limit is only 5,000. If it's more than 5,000 it becomes fully taxable. But there is second interpretation to this where they say gift is more than 5,000, excess is taxable. मतलब मैं कितना बोला इधर? अगर आप 8 टैक्सेबल बोलेंगे फिर भी एग्जाम में पूरा मार्क आएगा. अगर आप 3 टैक्सेबल बोलेंगे फिर भी एग्जाम में पूरा मार्क आएगा. स्टूडेंट पूछ रहा है सर आप क्या सजेस्ट करोगे? 8,000. क्यों? मतलब अदर्स उसका इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया. अदर्स में 60,000 है तो 60,000 टैक्स करते ना, 10,000 करते क्या? एग्जैक्टली. कंटिन्यू. नेक्स्ट, लैपटॉप फैसिलिटी. Laptop facility worth 30,000. Next, AC. AC was purchased by employer. AC was purchased by employer.
AC was purchased by employer for 1 lakh. For 1 lakh. And it was given for use. AC was purchased by employer for 1 lakh. And it was given for what beta? Use. It was given for use from April to December. ठीक है ना? And then it was sold after usage of, and it was sold after usage of 3 years 10 months. It was sold after usage of 3 years 10 months to the employee at 40,000. ठीक है ना बेटा? सब पॉइंट समझ गए ना आप लोग? दिमाग चल रहा है ना? क्या करना है? ठीक है ना? नेक्स्ट, ट्राइबल एरिया अलाउंस. ट्राइबल एरिया अलाउंस. ट्राइबल एरिया अलाउंस 300 per month. Next, loan given by employer to employee. Loan given by employer to employee of 6 lakhs. At 6%. It's of 6 lakh at 6% on 1st May 22. Full stop. No amount is repaid till date. No amount is repaid during the year. Full stop. No amount is repaid during the year. No amount is repaid during the year. Full stop. SBI rate on 1/5/22. SBI rate on 1/5/22 is 9%. SBI rate on 1/5/22 is 9%. And 1/4/22 is 11%. Is that clear, no? Speak out, beta. Next point. Reimbursement of, पूरा पेज हो गया क्या? नहीं हुआ ना? हाँ, चलेगा. Reimbursement of, अरे यार, I'm covering all the points, boss. Reimbursement of medical expenses. Reimbursement of medical expenses for treatment in private hospital. Reimbursement of medical expenses for treatment in private hospital. For treatment in private hospital, 12,000. Last point. Reimbursement of telephone expenses. Reimbursement of what, beta? Telephone expenses, 12,000. क्लियर है ना? स्पीकर बेटा निकालो. 2 मिनट. पेंशन ग्रेचुइटी. ठीक है ना यार? करो ना यार. इतना छोटा सा क्वेश्चन है. अरे चालू तो करो, तभी तो खत्म होगा.
क्या हुआ? ठीक है, साथ में सॉल्व करो। जानवी, सही आंसर लेके आने। अरे यार शिट, खुशी में एचआर नहीं है ना, ऐड कर देंगे लास्ट में। नहीं 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 नहीं, नहीं, इसी में लास्ट में एचआर ऐड करो, लास्ट में एचआर ऐड करो, मैंडेटरी एचआर है। एचआर 15,000 पर मंथ। हाँ बता आंसर, कुछ भी। 15,000 पर मंथ ब्रैकेट, रेंट पेड 10,000 पर मंथ इन चेन्नई। हाँ हाँ हाँ, रहने दे भाई। ऑनलाइन गाइस ऐड करो एचआरए। बेसिक सैलरी में आंसर हो गया। गुड इवनिंग सर। डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ने नहीं दे रहे। मेरी बुक्स है सर।
दैट इज ऑलवेज, फिर भी एक ही मिनट का एग्जामिशन है। नहीं, अलाउड नहीं है। ऐसा है तो फिर 10 मिल भी होता। Thanks. Last 2 minutes. अब्बा, बहुत ही ज्यादा बोल दिया। हाँ, कुछ भी। 5 मिनट। ये तो 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। किया करो सर प्लीज। एसी का वो दोनों दोनों लेगा यूज के लिए भी। Yes. तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं है ना कि साल भर यूज किया तो ही 10%, 3 महीने यूज किया फिर भी 10% ही लेंगे, तो फिर 3 महीने का लेंगे, 9 महीने का। 3 है क्या? 9 भी नहीं है। 9 गलत है, मैं क्या लिखा है? दिसंबर बोला है क्या? 15 दिसंबर बोला है। अप्रैल दिसंबर बोला क्या? ठीक है। ए,
Right side. दोस्तों हो गया क्या बेटा? साथ में डिस्कस करते हैं क्या एक बार? एक्चुअली मुझे साथ में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साथ में करूंगा तो फिर अपना दिमाग नहीं चलता है.
Are we done, my dear friends? हाँ, आंसर आ गया यार ऑनलाइन में. गुड. गिफ्ट इज टेकन एज फुल 8,000 टैक्सेबल. ये कुछ तो आंसर आया. 10 लाख चेंज कुछ आंसर लेके आए ऑनलाइन में कोई. नित्या तो फिक्स हो गया क्या? Somebody has got 10 lakhs. One more answer. दोनों का आंसर अलग अलग है. आप लोग तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे. अच्छा. ठीक है. एचआरए का आरपीएफ का वर्किंग करे ना बेटा. एम्प्लॉय आरपीएफ दिया ही नहीं ना मैं क्वेश्चन में. दिया ही नहीं तो फिर दिमाग क्यों चले. छोड़ दो. हाँ, एसी का करना पड़ेगा. एसी तो यूज भी है, सेल भी है उसमें. अरे वैसे एग्जाम में आया ऐसा पॉइंट एक बार, जो यूज भी है, सेल भी है. और एक आंसर है ऑनलाइन में. क्या हुआ? तो आंसर 10 लाख 53. वो तीनों ऑनलाइन आंसर अलग है. एक का 21 है, एक का 47 है, दूसरे का 48 है. तेरा बराबर है. गुड. लाइफ में से कॉन्फिडेंस चाहिए. दिव्या जी क्या आंसर है बेटा? 1080. ये तो अलग ही आंसर है. गुड. Guys, can we discuss once? बेटा बोलो ना बेटा. चलो बेटा बोलो. What do we start with? Basic salary कितना है? 6 lakhs. Everybody same figure. ठीक है. DA 1 lakh. ठीक है. नेक्स्ट क्या है बेटा?
फिक्स कमीशन कितना है? 60,000. देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 21,600. बराबर है ना? नेक्स्ट ओवर टाइम अलाउंस कितना है? नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट एम्प्लॉयर टू आरपीएफ. चलो एम्प्लॉयर टू आरपीएफ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच हैज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आरपीएफ? कितना बताओ, जो है वो बता. 15% ऑफ 6,35,000 कितना है? 95 250. ఎలా కూడా 12% of basic plus DA forms part of salary for retirement benefits. बराबर ना दोस्तों? बोलो बेसिक प्लस DA कितना है? 12% of 6,35,000 plus 36,000. समझ में आ रहा बेटा? कितना रहा ये? 83,80,520. Everybody same working? So taxable is equal to 14,730. Same figure everyone? Everybody? I'm sure we got full clarity on how to do working for employer contribution to RPF. Superb. Good. Next. Interest credited RPF कितना है? 25,000. Next. Food facility 9,000. Next. Gift 8,000. और कुछ? Laptop, it's given for use, no? So nil. Next. AC for use. What is the answer? 1 lakh into 10% into 9 by 12, which is 7,500. AC sold. Sold का working क्या है बेटा? 1 lakh minus 10% by SLM for each completed year of usage. How many completed years are there? It's actually 3 years change, but completed is only 3 years. 3 years मतलब 30%. 1 lakh 30%, 30,000. 1 lakh 30% is how much beta? 30,000. Correct, no? I repeat again, 1 lakh 30% is 30,000. So what is the balance value? 70,000, which is given for. So taxable is, how many have you done this correctly? Good, very good. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? एक ही पॉइंट में यूज और सेल दोनों कवर कर दिया मैंने. ठीक है ना? ऑनलाइन गाइस समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट. प्राइवेट एरिया अलाउंस. ट्राइबल एरिया अलाउंस 1,200. नेक्स्ट. इंटरेस्ट ऑन लोन कैसा करें? छह लाख का 6%. They have given it 6%. SBI रेट कौन सा लिया आप? 9 लिए या 11 लिए? 11. क्यों? Because we'll see first day of previous year, not the date of giving loan. And 11 minus 6 is 5%. 6 लाख का 5% into 11 by 12. Good, smart boys. होशियार हो गए यार. Smart guys. Guys में तो दोनों ही है ना. Good. Smart boys and girls. Very good. Next. और कुछ? 27,500 हो गया ना. Next. Medical 12,000 पूरा टैक्सेबल है ना. Next. टेलीफोन, अरे टेलीफोन फुली टैक्सेबल है ना यार. ये रीइंबर्समेंट है. If that would have been allowance, if that would have been allowance, it would have been fully taxable.
बराबर है बेटा? और कुछ है? HRA 1 लाख, यही है क्या एग्जाम्शन? यही है टैक्सेबल? 127 100 सबको सेम आंसर आया? पक्का? मुझे डाउट आ रहा है. What is the actual HRA? Actual HRA 1,80,000, 1.8 lakhs. रेंट पर कितना है? 1,20,000 minus 10% of 6 lakhs. ठीक है, ये कितना फिगर ये? तो वही लिस्ट है फिर. हो गया ना बात फिर, करेक्ट ही है. ये क्या है? माई आंसर इज नॉट करेक्ट. डिडंट टेक यूसेज थिंग ओनली, गॉट इट नाउ, सॉरी सर. वेरी गुड सर. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है? और कुछ हो गया? क्या बात है. ग्रॉस 11,05,000 लेस स्टैंडर्ड एक्शन 50,000, प्रोफेशनल टैक्स 2,000, 10 lakhs 53,630. गुड. ये 53,130 कैसा है रोमेश तेरे को? 53,630 है ना. I'm sure you like the question. So many points are combined in this, so that we get good clarity of thoughts. That's why I gave a question like this. And one question already we solved before this about gratuity, pension, and leave salary. Pura milke ek question. See, these kind of questions, when we solve, what happens is we get that level of perfection. And let me tell you honestly, this kind of question will not come in exam. What happens is, out of all these points, they'll pick up 7-8 points and make a 5-6 mark question. But we have to be ready for it. And that we are ready only when we have clarity on all these things. समझ में आ रहेगा बेटा? सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? श्योर? पक्का माय डियर फ्रेंड्स? चलो, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट. Let me teach today the concept of RFA also. What is RFA बेटा? Rent free accommodation. Wonderful. ये किसका भाई है? HRA का भाई है. मतलब HRA is like fixed money. RFA का एग्जाम्पल दो, 2-3 एग्जाम्पल दो आप. कैसा देते एग्जाम्पल? एम्प्लॉय ने बोला, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय के पास जाके बोला सर घर चाहिए मुझे. तो एम्प्लॉयर ने क्या बोला? तू रो मत, मैं को दूंगा घर. दूसरा, तू रो मत, तू जा घर पे रुक, मैं पैसे मैं देता हूं. दूसरा, तू रेंट पे कर दे, मेरे पास आ जा, मैं तेरे को रीइंबर्समेंट कर दूंगा. फर्क समझ में आया ना? HRA का RFA का फर्क भाई. HRA 11 से, ये RFA परक्विजिट. ये इंपॉर्टेंट परक्विजिट. आज ही कंप्लीट करते हैं इसको, टाइम है अपने पास. चलो, रेंट फ्री अकोमोडेशन सुना बेटा. In case of government, in case of what beta? License fees is taxable. Now what is license fee? Income tax is silent. That practically government only will decide. समझ में आ रहा है क्या? For government employee, what is taxable beta? License fees is taxable. Which who will decide? Government only will decide. Income tax कुछ बात ही नहीं करता है, इसलिए वो एग्जाम में आता ही नहीं है वो. अरे इनकम टैक्स साइलेंट है तो फिर एग्जाम में क्यों आएगा वो? Next one, non-government employees. बोलो, non-government employees covered under gratuity act, not covered under gratuity act. क्या नहीं रे भाई, क्या बात कर रहे हैं? Non-government employees, listen, accommodation is owned by employer, accommodation is hired by employer. तो समझ में आ रहा है क्या? If accommodation is owned by employer and population is greater than 25 lakhs. कुछ याद आ रहा है? Population greater than 25 lakhs as per latest census. When was census done last? 2011. 21 census is not done. Whatever we are talking about India cross China population and all is all unofficial reports. Official statement government has never given that. Not given. That's all unofficial news. क्या बहुत बड़ा काम थोड़ी है यार वो, इतना ऑफिशियली बोल के ऐसा शान से बोलेंगे इंडिया क्रॉस चाइना. टेक्नोलॉजी थोड़ी है. चलो, पॉपुलेशन इज मोर देन व्हाट बेटा? 25 lakhs. देन द आंसर इज 15% ऑफ सैलरी.
And let me tell you one very, very important point here. Listen everybody carefully, sir. 15% of salary, बेटा वो exempt नहीं है, वो ही taxable है. समझ में आ रहा है बेटा? 15% of salary is not exemption. That is taxable value of perquisite. Are we clear? So what is the taxable value of perquisite? 15% of salary. Next. Population greater than 10 lakh does not exceed 25 lakhs. 10% of salary. 10% of salary क्या है? Taxable. दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? Next. Population does not exceed 10 lakhs. 7.5% of salary. ये क्या है? Taxable. So that 15% of salary, 10% of salary, 7.5% of salary is the taxable amount. That is what amount, beta? Taxable amount. Are we getting clarity? Now I'll proceed to one very important point, then you can continue writing it. Listen here very clearly. Now what is the meaning of this word called salary? So both important. Salary means basic plus DA if मतलब if forms part of salary plus bonus plus any commission मतलब क्या है? Fixed commission also plus all taxable allowances. परक्विट्स ऐड नहीं करेंगे भाई, सिर्फ क्या ऐड करेंगे? अलावेंसेस. दैट्स इट. फर्क समझ में आया क्या उसमें इसमें? सर, so in simple terms to put it, in entire salary chapter, what is the meaning of salary in different places? अलग अलग जगह पे अलग अलग इधर ऐसा कुछ सीन है क्या? 4 ही पॉइंट है. एक केस एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली बेसिक, ग्रेचुइटी कवर्ड ग्रेचुइटी एक्ट, basic plus entire DA, rent free accommodation, basic plus DA part of salary plus bonus plus commission plus all taxable allowances. Last wala, any other case, basic plus DA if plus commission if given as percentage of, if given as fixed percentage of turnover. हो गई बात, कुछ नहीं है. समझ में आ रहा है बेटा? Don't try to mug up इधर वो इधर नहीं. Calm down, relax, chill. समझ में आ रहा है बेटा? चलो back to job. Come on. Owned by employer, what is the answer? Population is more than 25 lakhs, what is the answer? 15% of salary. More than 10 lakh does not exceed 25 lakhs. 10% of salary does not exceed 10 lakh. 7.5% of salary. याद तक सबको clear है? Now right side you see. Hired by employer. Actual hire charges. Actual what बेटा? मतलब एक्चुअल रेंट जो है और 15% ऑफ सैलरी, whichever is lower. Don't write 1 minute, listen here. 1 सेकंड सुन लो बेटा, 1 सेकंड सुन लो. एक्चुअल हायर चार्जेस और व्हाट बेटा? 50% ऑफ सैलरी, whichever is lower. अगर अकोमोडेशन हायर्ड है तो मतलब एक्सपर्ट हैज टेकन वन हाउस ऑन रेंट एंड दे गेव इट टू द एम्प्लॉइज. इफ एक्सपर्ट हैज गिव टेलिंग 1000 रुपए दूंगा, जो करना है कर ले, allowance. Expert is buying one house to give it to the employees. Population. समझ में आना बेटा? अब सुन लो ध्यान से. This 15% will become 24% in case of hotel or guest house. लिखो मत, 1 मिनट रुको. होटल और गेस्ट हाउस क्या परसेंट है बेटा? 24%. But in this hotel or guest house, if accommodation is given on account of what बेटा? ट्रांसफर. शिवते का जॉब हैदराबाद में था, अचानक बोले चल बैंगलोर चल. री किधर जाकर रुकना उधर? कोई भी नहीं हमारा दोस्त, कोई नहीं रिलेटिव, क्या करना? वो बोल रहा है तू रो मत, तेरे को होटल में अकोमोडेशन देंगे, तू रुक जा होटल में, 1 महीना रुक जा, उसके बाद तू ढूंढ ले, उसके अंदर तू ढूंढ ले. समझ पा रहा बेटा? इनकम टैक्स इज टेलिंग फर्स्ट 15 days नॉट टैक्सेबल. ये प्रैक्टिकली बहुत कॉमन है. मेरे ऑफिस में एक बंदा काम करता था हैदराबाद में. he got a job in Hyderabad. Sorry, he got a job in Bangalore in a very good company. He told I'll leave the job. I told I'll pay you more. Don't go. He told no sir, I want to go because that's a corporate company.
I want to gain experience there. I told okay, all the best. किसका फ्यूचर थोड़ी रोकेंगे यार अपन. आई गिव एन अपॉर्चुनिटी टेलिंग मैं ज्यादा सैलरी पे करूंगा. वो बोला नहीं सर मेरे को कॉर्पोरेट ही जाना है तो जाना भाई अच्छी बात है ऑल द बेस्ट. उससे ज्यादा मैं क्या बोलूं. When already prepared the mind, what more I will tell? I told him all the best. And those people gave him accommodation in Bangalore for 15 days in a hotel. 15 दिन नहीं दिए वो. प्रॉपर 15 दिन दिए. क्यों? नॉट टैक्सेबल. अगर 20 दिन देते तो 5 दिन का होटल चार्ज टैक्सेबल होता था उसके हाथ में. एक्चुअली 15 दिन बहुत बड़ी बात है. प्रैक्टिकल कंपनी देते हुए नहीं 15 दिन. एक हफ्ते 10 दिन देते वो लोग. Anyways, all that is practical point. But income tax is telling how many days is exempt? 50 days. उसके ऊपर है तो taxable. Correct, no? Now I have a question. Shiva Teja, when I was doing job in 2011, I went to Bangalore and I stayed for 25 days in Bangalore. एक क्लाइंट का काम था तो 25 दिन में बैंगलोर में ही था रोज. I mean, had a lot of fun. That was memorable trip for me. सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक काम किए. 12 घंटा काम किए. उसके बाद सोए नहीं. रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक फुल एंजॉय किए पुणे बैंगलोर में. फिर जाके 3 बजे सोए, फिर 7 बजे उठ गए, फिर काम चालू. बोला ना यार वो टाइम पे ऐसा कुछ, देयर आर नो कमिटमेंट्स, नो गर्लफ्रेंड, एंजॉयिंग लाइफ. देयर वाज बिग डिफरेंट peak level of enjoyment altogether in a different manner. So that time 25 days they gave accommodation in hotel, and the accommodation that too they gave in a very good hotel. It was Marriott, not JW, different Marriott, Courtyard. The name was Courtyard actually, and that too they gave in an area called Whitefields. In Bangalore there is an area called Whitefields, Race Course Road, very popular area it is. There they gave the accommodation. 25 days accommodation they gave, but nothing was taxable in my hands. क्यों? Official. ये ट्रांसफर की बात ही मत करो. ये सब जो भी हम बात कर रहे हैं बेटा, ये सब पर्सनल की बात कर रहे हैं ना. अगर ऑफिशियल है तो टैक्सेबल क्यों होगा? 1 रुपए भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर ऑफिशियल है तो. Are you getting clarity on this? Everybody, sir, all of us clear with this point. So if accommodation is owned, we'll look at the population. Excuse me. Relax. Yeah. अटक गया था. If accommodation is owned, we look at what, my dear friends? Population. More than 25 lakhs. 15% of salary. More than 10 lakh does not exceed 25 lakhs. 10% of salary. Does not exceed 10 lakh. 7.5% of salary. But if accommodation is not owned and it is hired, what is the answer? Actual hire charges or 15% of salary, whichever is lower. But if it is not in normal घर नहीं, hotel or guest house है, 15 will become 24. And if it is on account of transfer, first 15 days is not taxable. Now I'll tell a special point. Listen, then you can proceed to rights. That is, if accommodation is given in a remote area for somebody who's working in a mining area or an offshore site, then it is exempt. Fully exempt. अरे यार बेचारा वो जाके कोल माइन के पास काम कर रहा है, उसके लिए टेम्पररी घर बना के देते उसको उधर जब तक काम कर रहा है. बराबर है ना? उसको तुम टैक्स करेंगे क्या? नॉनसेंस. You're getting my point, no? For example, somebody is working near coal mines. उसको रोज आना जाना हो नहीं सकता है. Somewhere it's offshore site it is. Coal mines. Or oil exploration site. Oil exploration site. Getting my point, no? That case is what is the answer? Not taxable. Are we getting clarity, everybody? Speak out, beta. Everybody clear with this point? Take it. नहीं, above 15 days is taxable. होगा ना? Because in hotel they generally charge based on nights, no? In hotel they charge based on night stays. Done. Listen now. Sir. हो गया?
So are we clear? Next part is in here. Sir, imagine a case where there is an employee who's working in Hyderabad and there he has got rent-free accommodation. ठीक है ना बेटा? He is staying with his wife, mother, father, family, पूरा हैदराबाद में ही है. Suddenly he got shifted to Bangalore. And in Bangalore also they give rent-free accommodation. उसको सड़क पे थोड़ी रहेगा ये. पर ऐसा बोलेंगे क्या फैमिली को निकाल बाहर? और ऐसे कैसे आ सकते हैं यार? वो अकेला आदमी कुछ भी कर सकता है. फैमिली ऐसे कैसे थोड़ी हिल जाएंगे ऐसे ही? Correct? It's not an easy task. That means what you have to understand here, accommodation is given at both place of business. Then law is telling first 90 days. ये दोनों में से जिसका वैल्यू कम है उसको हम टैक्स करेंगे. आफ्टर 90 डेज दोनों को टैक्स करेंगे. अरे पॉइंट समझे क्या? लॉजिक से बात है ना यार. सी दोनों में से जो कम है उसको टैक्स करेंगे बोल रहे. इनकम टैक्स में तो अच्छा ही बोल रहे. बिकॉज अचानक ट्रांसफर हो गया, फैमिली इज स्टेइंग देयर एंड ही इज कमिंग एंड स्टेइंग हियर एंड एम्प्लॉयर इज टेलिंग तो दो जगह एंजॉय कर. दो जगह एंजॉय कर इसलिए बोल रहे बिकॉज उसको ट्रांसफर करना है भाई. अगर कंपनी बोलता है भाई तू निकल, फैमिली को निकाल, वो बोलता है चल फुट निकल. अरे बराबर है ना? जितना रेट एम्प्लॉय के पास है उतना रेट एम्प्लॉय के पास भी रहता है ना. इट्स नेवर अ गेम वेयर एम्प्लॉयर विल डिक्टेट द टर्म्स टू एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर आल्सो इज ऑन राइट टू डिक्टेट टर्म्स टू एम्प्लॉयर. करेक्ट? नो, कभी भी बोल सकते हैं मैं छोड़ के जा रहा हूं जॉब. छोड़ के जा रहा हूं तो क्या करेगा फिर? मिलना चाहिए ना ऐसी जगह, ऐसे बंदा. मजाक थोड़ी है. दोनों भी है, उसको भी मिलना चाहिए ना ऐसा जॉब, ऐसे सैलरी. इट्स बोथ साइड्स. सो क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? नाउ whatever I taught you so far is all RF UFA actually. Rent free unfurnished accommodation. समझ में आ रहा है क्या? What if घर के साथ फर्नीचर भी दिए? Then it is called rent free furnished accommodation. Simple. Calculate the value of rent free unfurnished accommodation. How will you calculate? Accommodation is owned, accommodation is hired. Owned, look at the population. Hired, look at higher charges. Hotel 24%, normally 15%. समझ में आ गया बेटा? इसको क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? फर्नीचर. कैसे ऐड करेंगे? जो सेम अपना यूज वाला कॉन्सेप्ट है. ओन्ड मतलब 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट. बराबर है ना बेटा? दोस्त समझ में आ रहा ना? हायर क्या करेंगे बेटा? एक्चुअल एयर चार्जेस. ये आ गया, एक फिगर आ गया, बट एक तो माइनस करेंगे बेटा हमेशा. अगर है तो क्या हो? अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय. कुछ रिकवर करेंगे तो माइनस करेंगे, बैलेंस कोई टैक्स करेंगे. अल्टीमेटली द होल आइडिया ऑफ इनकम टैक्स इज दैट वी वांट टू टैक्स द बेनिफिट एम्प्लॉय इज गेटिंग. अगर उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो टैक्स नहीं करेंगे. मिल रहा है भाई तो टैक्स पे कर. What happened, Divya? Where have you lost? Thinking something? Celebrations done? It's New Year for us also. Even in Telugu, it is New Year today. Ugadi. We call it Ugadi. नहीं, वो नहीं करते, पर हम लोग वो बनाते. दैट पानी में कैरी डाल के पूरा सब मिक्स करके बनाते हम लोग. लेमन, खट्टा मीठा पूरा मिक्स होता है उसमें. इधर ही बनता है ना एक्चुअली. सी दैट इज अ सिंबॉलिक ड्रिंक व्हाट वी हैव, व्हिच इज हम लोग तेलुगु में उसको उगादी पचड़ी बोलते. उगादी पचड़ी. It is symbolically saying that it has got mixed elements of both spice, hot, sweet, sour. Next year, you will travel with all these things and take everything positively and keep smiling and stay happy. उसका logical reason ये है.
अपन क्या है, बस पी लेते हैं, बस टेस्टी टेस्टी है, बस और कुछ नहीं. उसका लॉजिकल रीजन एक्चुअली. ठीक है, सारे क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? यार दोस्तों बोलना है यार. रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. समझा? याद करने के लिए आपको शॉर्टकट बोल दिया हमने. दोस्तों क्लियर है ना? पक्का? एक छोटू सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. स्टार्ट, कम ऑन. कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग. छोटू सा क्वेश्चन, डोंट वरी. कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, compute taxable salary from the following information. Basic 50,000 per month. DA 20,000 per month. Bracket 60% forms part. Fixed commission 10,000 per month. Bonus 1 lakh. Children education allowance 1,000 per month per child for 2 children. ठीक है ना बेटा? Next, reimbursement of medical expenses. Reimbursement of what beta? Medical expenses 15,000. Telephone allowance 15,000 per annum है ये, obviously कुछ लिखा नहीं, मतलब per annum है. Telephone allowance 1,000 per month. Medical expense in private. ट्रीटमेंट नहीं बोला ना मैंने, इसलिए लिखा नहीं, वो मेडिकल एक्सपेंस लिखा ना, मतलब बड़ी सेंस खर्चा करे. ट्रीटमेंट की बात करते हॉस्पिटल प्राइवेट या गवर्नमेंट की बात करते. ठीक है. नेक्स्ट, रेंट फ्री अकोमोडेशन इन rent-free accommodation in Patna, population 33 lakhs, accommodation owned by employer. ठीक है ना बेटा? दोस्तों, प्रोफेशनल टैक्स 2,000 पेड बाय एम्प्लॉयर. हो गया क्वेश्चन. कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी.
हो गया क्या बेटा? ऑनलाइन में आंसर आ गया ऑलरेडी, 2-3 आंसर्स. हो गया बेटा? चलो, व्हाट इज द बेसिक सैलरी? 6 lakhs. अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इसके लिए क्वेश्चन दिया मैंने, ऑनलाइन में पूछ रहा है मेडिकल एक्सपेंस को लेना चाहिए, ये सब डाउट्स आते पता है मुझे, इसलिए मैं क्वेश्चन दिया है. बेसिक डीए 2 लाख, फिर क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है? 21,600. फिर फिक्स कमीशन कितना है? 1,20,000. फिर बोनस कितना है बेटा? 1 लाख. फिर मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट है ना, वो तो कितना है? 15,000. फिर टेलीफोन अलाउंस ऑफ परक्विजिट तो पूरा टैक्स हो जाएगा ना, कितना है? सर क्लैरिटी आ रहा है ना, परफेक्शन आ रहा है ना सबको? नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स कितना है? पेड बाय एम्प्लॉयर ना बेटा. नेक्स्ट आरएफए उतना ही है ना बेटा. फिर ग्रॉस निकालो, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, प्रोफेशनल टैक्स 2,000. आ गया तुम्हारा नेट टैक्सेबल सैलरी. समझ में आ रहा ना बेटा? तो चैलेंज इज ओनली व्हाट? रेंट फ्री अकोमोडेशन. फर्स्ट पॉइंट इज अकोमोडेशन ओन्ड और हायर्ड? ओन्ड. क्या है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स? It depends upon population. कितने population? More than 25 lakhs. So value of perquisite is 15% of salary, which is equal to 15%. सर ये 15% एग्जाम नहीं है भाई, टैक्सेबल है. 15% of what? 6 lakhs. 6 lakhs plus 1 lakh 44,000 plus 21,600 plus 1 lakh 20,000 plus 1 lakh
plus 12,000. That's it. You should not consider professional tax. You should not consider medical because they are perquisites. समझ में आ गया बेटा? कितना है वो? फाइनल आंसर बोलो. रेंट फी अकोमोडेशन बोलो. 640 टोटल. 60 to 40. फाइनल आंसर 1208. गुड. ऑनलाइन एक दो लोग आंसर दिए बराबर. गुड. So I think we got the clarity of thought on this. Sir, with this discussion, my dear friends, we are done with more or less lot of concepts in salaries. थोड़ा बाकी है जो हम कल बात करके क्लोज कर देंगे. फिर सैलरी खत्म. तो बचेगा क्या फिर? पीजीवीपी और अपना टीडीएस का काम है. बराबर. रिटर्न ऑफ इनकम डिडक्शन साथ साथ में जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसका टेंशन मत लो आप. डिडक्शन भी है ना. थोड़े तो आराम से मतलब थोड़ा ऑलरेडी आपको पता है बट मुझे एक बार आपको वापस याद दिलाना है. ATEA, EEB वैसे वाले. TTA, TTB तो आप कैसे भी बोलेंगे. नहीं वो कल पढ़ेंगे हम लोग. सैलरी में ही है वो कल पढ़ेंगे. ये वही तो बच गया. वो और पीएफ का थोड़ा कहानी वो थोड़ा छोटे छोटे पंच बाकी है. वो गाड़ी वाला वो सब शॉफर वाला विदाउट ड्राइवर विथ ड्राइवर वो सब कल बात करेंगे. अपना चार्ट से डिस्कस करेंगे. सेम चार्ट जो हमने रेगुलर बैच में वो भी इधर ही प्रिंट किया मैंने ऑलरेडी. वो सिंपल है उसमें से पढ़ते हैं. ठीक है. डन बेटा. थैंक यू सो मच. टेक केयर. टुमारो विल कंप्लीट सैलरीज. विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टास्क. My expectation is that maximum by another 5 to 6 days we'll be able to complete everything. Sunday नहीं Monday हो जाएगा. ठीक है. आज वेडनेसडे ना. Monday Tuesday तक हो जाएगा पक्का. Sunday नहीं होगा. सवाल ही नहीं. बाद में लिखो ना यार. प्रॉब्लम क्या है? हाँ ठीक है ना. डन. थैंक यू सो मच. आपको टैक्स पेपर कब है आपका?